Bismillahirrahmanirrahim. Unit number 2, Pharmacology, BSN 3rd semester, KMU slide, fast reading. Objective है define most commonly used category of antibiotic that is used to prevent and treat infection. Briefly discuss action and effects of a selected drugs category. List some of the most commonly used drugs for each drug category. Discuss nursing, measuring patient's education which can be taken if patient is using to treat and prevent infection. Antimicrobial therapy. Antimicrobial therapy mean kill or inhibit the growth of microorganisms such as bacteria, fungi, protozoa. Therapies that kill microorganisms are called microbiocidal therapies, and therapies that only inhibit the growth of microorganism is called microbiostatic. जो इनहिबिट करता है ग्रोथ को माइक्रोबायोस्टेटिक एंड किल करता है बायोसाइडल. एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी एम्पेरिक इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म नॉट येट आइडेंटिफाइड, तो उसको हम एम्पेरिक देंगे. डिफिनेटिव मीन अगर हमें कोई माइक्रो का पता है तो हम डिफिनेटिव देंगे. प्रोपाइलेक्टिक मीन हम प्रिवेंटिव देंगे, जो हमें पता ना हो और उसको बचाने के लिए देंगे प्रोपाइलेक्टिक या डिफिनेटिव. एम्पेरिक मीन इन्फेक्टिंग organism identified and specific therapy chosen for narrow spectrum prophylactic prevent and initial infections or insurance after infection. Antibiotic mean is derived from antibiosis, which means anti against life. Antibiotic are agent made from living organism synthetic that are used to inhibit specific bacteria that can produce them. Streptomyces या bacillus, molds, penicillium notatum या cephalosporin. Bacteria and antibiotic. Bacteria are microorganisms that invade the human body through many routes like respiratory, GI and skin के through body में चला जाता है. Human immune response is activated as body tries to rid itself of bacteria. The classic sign of inflammation, swelling, heat, redness and pain, fever begins show up. body के अंदर बैक्टीरिया चला गया, बॉडी बैक्टीरिया से बचना चाहता है तो इन्फ्लेमेशन करेगा. इन्फ्लेमेशन होगा तो स्वेलिंग, हीट, रेडनेस और पेन आएगा. फ्यूर आएगा, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो हम फिर क्या देंगे, पेनाडोल वगैरह देंगे. द गोल ऑफ एंटीबायोटिक थेरेपी इज टू डिक्रीज पॉपुलेशन ऑफ इन्वेडिंग बैक्टीरिया टू अ पॉइंट एट विच द ह्यूमन इम्यून सिस्टम कैन इफेक्टिवली डील. ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ستوي جرام بوزيتيف واقعي ولا تك والوي او نيجاتيف واقعي شاغا تين والوي كوغينا بوس ليبو بروتين مي داي مين ديفرنس تا شاغا تيو دا وغينا لو جو چيكام पॉजिटिव अगा स्टेन पर्पल कलर वर्काई पॉजिटिव और पी दा इस तरह ये याद रखना. और नेगेटिव के लिए इसमें आई है तो इसका मतलब है नेगेटिव. ये स्टिंग पेन कलर देगा. जस्ट मैं इसको रीड कर रहा हूँ, जस्ट आपने यही बातें याद रखनी है. मोस्ट बैक्टीरिया कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज अ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ थिक लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना होता है. पॉजिटिव में स्टेन पर्पल कलर होगा विच सब्जेक्टेड टू द ग्राम स्टेन प्रोसीजर. ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है सेल वॉल थिन लेयर होता है एंड सेल वॉल इंक्लूड द आउटर मेम्ब्रेन. मैंने कहा ना लिपोपॉलीसेकेराइड प्रोटीन होगा जो बहुत डेंजरस होता है. ग्राम नेगेटिव डेंजरस होता है. वो बैक्टीरिया का स्ट्रेन पिंक कलर देगा सब्जेक्ट टू द ग्राम पॉजिटिव प्रोसीजर त्याचे वचाई. वाइल बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड नेगेटिव बैक्टीरिया प्रोड्यूस साइटोटॉक्सिन. ये देखो ना, ग्राम पॉजिटिव थिक है, पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना है, ये थिन है लेकिन इसके ऊपर लिपो प्रोटीन्स है. और ये आप देख सकते हैं पिक्चर में. डिफिनेशन क्या है, व्हाट इज कीमोथेरेपी. कीमोथेरेपी मीन केमिकल की थ्रू बॉडी की थेरापीज करना इस कॉल्ड कीमोथेरेपी. ड्रग्स की थ्रू, केमिकल्स की थ्रू. कीमोथेरेपी मीन्स क्या है, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स कौन से होते हैं, एंटीबायोटिक क्या है, रीड देते हैं. इट मीन यूजिंग केमिकल एजेंट दैट सेलेक्टिव टॉक्सिक टू द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द डिजीज. कॉजेटिव एजेंट बैक्टीरिया होता है, फंजाई होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या मैलिग्नेंट सेल होता है. तो chemotherapy mean the use of drugs to eradicate microorganisms and parasitic worms and malignant cells in the body is called chemotherapy. Antimicrobial drugs कौन से होते हैं, drugs that are used to treat infections with the microorganism is called microbia. microorganism की वजह से infection हुआ है बॉडी को, हम drugs देंगे तो antimicrobial drugs हैं. antibiotic mean बैक्टीरिया के खिलाफ जो हम drugs इस्तेमाल करते हैं. chemical substance produced from the various microorganisms, bacteria, fungi that kill inhibit the growth of other microorganisms. antibiotic resistance क्या है कि वो अगर हम बार बार सेम एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो बैक्टीरिया भी अपने आप को चेंज कर लेता है और इन्फेक्शन काज करता है. और जो हम वही दवाई लेते हैं उसका बॉडी पर या बैक्टीरिया पर कोई एक्शन नहीं होता, उसको किल नहीं कर सकता, उसको इनहिबिट नहीं कर सकता. तो इसको कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं. इन्फेक्शन किसे कहते हैं, बॉडी के अंदर बैक्टीरिया का चला जाना, इसको कहते हैं इन्फेक्शन.
The invasion या multiplication of the pathogenic microorganism in the body tissue causing disease in the host is called infection. Sepsis किसे कहते हैं? The presence of bacteria, bacteremia, blood के अंदर bacteria is called bacteremia. Other infectious organism, toxin created by infectious organism in the bloodstream which spread throughout the body. It is a potentially life-threatening complication of an infection. Sepsis occur when the chemical is released into the bloodstream to fight the infection, trigger inflammatory response throughout the body, damage multiple organ system. Super infection, a new infection occurring in the patients having a pre-existing infection, for example, is called super infection. पहले से कोई infection है और वो immune system को down करे, इसकी वजह से और भी infection हो जाए, is called super infection. Super infection. Principle of antimicrobial therapy. Antibiotic therapy take advantage of the biochemical differences that exist between the microorganism and human cells. Antimicrobial drugs are effective in the treatment of infection because of their selective toxicity. That is why have the ability to injure or kill the invading microorganism without harmful the cells. तो बॉडी के सेल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस होता है. किस चीज़ का डिफरेंस होता है? उसके एंटीजन का डिफरेंस होता है. सेल के मेम्ब्रेन पर अलग एंटीजन है, बैक्टीरिया पर अलग एंटीजन है. तो हम वही दवाई देंगे जो बैक्टीरिया के एंटीजन पर बाइंड करे और बैक्टीरिया के अंदर सेल की फिजियोलॉजी को क्या करे, डैमेज करे और उस बैक्टीरिया की डेथ हो जाए. Selection of antimicrobial agent. Selection of the most appropriate antimicrobial agent require knowing the organism identity, the organism susceptibility. अगर हम बैक्टीरिया को किल करें तो इस बातों का हमें पता होना चाहिए. Organism susceptibility, particular agent, site of infection, patient factor, safety agent and cost of therapy. However, some patients require empiric therapy. Empiric mean हमें बैक्टीरिया का पता होना चाहिए. Immediate administration of drug prior to bacterial identification and susceptibility testing. अच्छा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म. उसको हमें पहले ऑर्गेनिज्म का पता है कि स्किन में रशेस है, कौन से बैक्टीरिया की वजह से है. बैक्टीरिया जीआईटी में इन्फेक्शन है, किसकी वजह से है, या यूआईटी है, कौन से बैक्टीरिया की वजह से है. उसके मुताबिक हम उसको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करेंगे. Characterization of the organism essential to selection of the proper drug is generally necessary to do the culture sensitivity test, arrive at the conclusion diagnosis and determine the susceptibility to antimicrobial agent. Thus, it is essential to obtain a simple culture of the organism prior to initiating treatment. Determining antimicrobial susceptibility in effective organism. After a pathogen is cultured, its susceptibility to specific antibiotics survives as a guide in choosing antimicrobial therapy. Bacteriostatic versus bactericidal. Bacteriostatic mean सिर्फ उसको inhibit करता है growth को. Bactericidal mean उसको पूरा कत्ल करता है, उसको kill करता है. Bacteriostatic drug which arrests the growth and replication of bacteria. Bactericidal when kill bacteria. For example, linezolid is the bacteriostatic against Staphylococcus aureus and Enterococci, but is bactericidal against most strains as pneumonia. अच्छा, minimum inhibitory concentration, minimum bactericidal concentration. Minimum inhibitory concentration. Minimum inhibitory concentration is the lowest concentration of the antibiotic that inhibit the bacterial growth. To provide effective microbial therapy, the clinical obtainable antibiotic concentration in the blood fluid should be greater than minimum inhibitory concentration. Minimum bactericidal concentration is the lowest concentration of antimicrobial agent that result in 99.9% decline in colony count after overnight dilution incubation. Effective of the site of infection on therapy. The blood-brain barrier. इफेक्ट ऑन द साइट ऑफ इन्फेक्शन ऑन द थेरेपी. अगर मसला ब्रेन में है और वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर सकता, वो एंटीबायोटिक इन्फेक्शन तक कैसे हमारा हमें रिजल्ट देगा? रिजल्ट नहीं देगा. तो साइट उसका होना चाहिए. The barrier is formed by the single layer of the tail-like endothelial cells fused by tightly junctions that impede entry from the blood to the brain of virtually all molecules except those that are small and lipophilic. The penetration and concentration of an antibacterial agent in the cerebrospinal fluid is particularly influenced by the following factors. Lipid-soluble drug as quinolones and metronidazole have significant penetration into the CNS. The contrast, beta-lactam antibiotics such as penicillin are ionized at the physiologic pH and have low solubility in lipids. They therefore have limited penetration through the intact blood-brain barrier under normal condition. तो इसका मतलब है क्या है? इसका मतलब है कि बीटा-लैक्टम एंटीबायोटिक जो होते हैं पेनिसिलिन,
वो पास नहीं हो सकते। मोलिकुलर वेट ऑफ द ड्रग्स या प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ द ड्रग, ये फैक्टर इफेक्ट करते हैं। पेशेंट फैक्टर, immune system उसका, renal dysfunction या serum creatinine level are frequently used, and index of the renal function are adjustment of the drug regimens. Hepatic dysfunction, poor perfusions, age, pregnancy, lactation, safety of the agent, cost of therapy, ये फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर प्रेजेंट है टू डिटरमाइन प्रोबेबल साइट ऑफ इन्फेक्शन होगा। ऑब्टेन कल्टस इंक्लूडिंग ब्लड, बिनाइन एम्पेरिक थेरेपी, 8 D3 चेक कल्चर एंड ग्राम स्ट्रेन्स, नेगेटिव आर कोलोनाइजेशन करता है। अगर नहीं है तो ऑब्वियसली क्लोज ऑब्टेन कल्चर पेशेंट वर्सन्स, तो फिर ये स्टेप्स फॉलो करते हैं। अगर स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबायोटिक, नैरो स्पेक्ट्रम, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब है किसी खास बैक्टीरिया के खिलाफ। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम मीन या पॉजिटिव या नेगेटिव के खिलाफ भी कर सकता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मीन कौन सी जो भी बैक्टीरिया उस पर एक्शन कर लेता है। तो नैरो स्पेक्ट्रम में इज द आइसोनाजिड इज द एक्टिव ओनली अगेंस्ट माइकोबैक्टीरिया, तो ये टीवी में हम देते हैं। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एम्पिसिलिन एक्ट अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड सम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज कॉल्ड एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मीन टेट्रासाइक्लिन और क्लोरमफिनिकॉल अफेक्ट अ वाइड वेराइटी ऑफ माइक्रोबियल स्पेशीज। ये हमारे साथ क्या है, ये पेंसिलिन है, नेगेटिव पॉजिटिव पे एक्ट करता है या क्लीमीडिया पे एक्ट करता है। दिस डायग्राम गिव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये ड्रग्स के नाम है और ये इसका एक्शन है, मतलब नैरो है, स्पेक्ट्रम है, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम है या ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। आइसोनाजेड, पॉलीमाइसिन, वेनकोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, स्टेफाइलोकोकल, क्यूनोलॉन, कार्बापिनम, सल्फोनामाइड्स एंड सेफेलोस्पोरिन। What is antimicrobial resistance? क्या है? Antimicrobial resistance is the ability of the microbes to resist the effects of drug in the same dosage. इसका मतलब ये है कि वो दवाई, सेम दवाई एक पेशेंट खाता है, उस पर असर करता है, वो दूसरा जब खाता है उस पर असर नहीं करता। जिस पर नहीं करता इसका मतलब है इसने पहले भी ये दवाई ली है, अभी इसका बॉडी के बैक्टीरिया इसके साथ किल नहीं हो रहे, इसका मतलब है एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस है ये। When the drug lost the ability to either kill or inhibit the growth of microbes, and the microbes gain the ability to survive in the presence of drugs to which they were previously susceptible, this is called resistance. What is intrinsic resistor? इन रेजिस्टेंस तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन इंट्रेंसिक का मतलब होता है कुदरती तौर पर। इंट्रेंसिक रेजिस्टेंस इज द इनिएट एबिलिटी ऑफ द बैक्टीरियल स्पीशीज टू रेजिस्ट एक्टिविटी ऑफ द पार्टिकुलर एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स। इसका मतलब है कि बैक्टीरिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो पहले से क्या करता है, डोज को रिजेक्ट करता है कि मुझे स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक दे दो। दिस कैन आल्सो कॉल्ड insensitivity since it occur in organisms that have never been susceptible to that particular drugs. Lack of affinity to the drug for the bacterial target, for example penicillin are not effective against myobacterium, क्योंकि उसमें सेल वॉल नहीं होता, वो पेंसिलिन तो सेल वॉल पर एक्ट करता है, तो इसी वजह से लैक ऑफ एफिनिटी होता है। इन accessibility of the drug into the bacterial cell, for example gram negative bacteria are naturally resistant to vancomycin and penicillin G and B because inability to penetrate outer membrane. This is the cause. Acquired resistance का मतलब ये है कि ये ज़्यादा डोज लेने की वजह से अब बैक्टीरिया इसके साथ किल नहीं हो रहे। Acquired resistance means when the microbes gains ability to grow in the presence of drugs. Acquired resistance develops when microorganisms no longer respond to the drug to which they were previously susceptible. Beta lactamase activity, this family of the enzymes hydrolyzes the click amide bond of the beta lactam ring, which result in loss of bactericidal activity. Altered PBP, modified PBP have lower affinity beta lactam antibiotic. This is our culture, किस तरह हम करते हैं एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स। कॉमन माइक्रोबियल काजिंग डिजीज, बैक्टीरिया की वजह से एंटीबैक्टीरियल वायरस को हम एंटीवायरल देंगे, फंगल को एंटीफंगल देंगे, प्रोटोजोआ को एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स देंगे। हिस्ट्री ऑफ एंटीबायोटिक, ये एंटीबायोटिक किसने डिस्कवर किया था, बहुत अच्छा काम किया था, अल्लाह इसको जन्नत दे। बिफोर पेंसिलिन इंट्रोडक्शन देयर वाज नो इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर ट्रीटिंग इन्फेक्शन। 1928 पेंसिलिन द फर्स्ट ट्रू एंटीबायोटिक वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, प्रोफेसर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी स्टीम हार्वे हॉस्पिटल पर लंदन के था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग was bit disorderly in his work. He left his petri dish uncovered. Upon returning from the holidays, he noticed that the fungus Penicillium notatum had contaminated culture plate Staphylococcus bacteria. The fungus had created bacteria
free zones where there it grow on the plate. Fleming isolated and grew mold in pure culture. He found that P. notatum proved extremely effective even at a very low concentration, preventing staphylococcus growth even when diluted 800 times. Fleming published his finding in the British Journal of Experimental Pathology in June 1929. क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल, ये इज़ द बेस्ट एमसीक्यूज मोस्टली यहाँ से आएंगे। आपको क्लासिफिकेशन आना चाहिए। इनहिबिट सेलवाल, जो सेलवाल को इनहिबिट करता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, जो न्यूक्लिक एसिड पर एक्ट करता है, जो फोलेट मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करता है। दिस इज़ द फोर वेपन जो यूज़ करते हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए। 4 वेपन हैं हमारे साथ। सेलवाल को इनहिबिट करने के लिए हमारे साथ पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, कार्बापीनम, मोनोबैक्टम, ग्लाइकोपेप्टाइड है। जबकि प्रोटीन साइंटिस्ट को इनहिबिट करने के लिए क्लोरमफिनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन, मैक्रोलेट्स, ऑक्साजोलिडिनस, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स या लिंजोलेड है। लिंजोलेड अल्टर न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म इज कॉल्ड क्यूनोलॉन्स है हमारे साथ। फोलेट के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करने के लिए ट्रायामेथोप्रेम सल्फामिथाक्सोल, दिस इज आवर वेपन जो हम यूज़ करते हैं बैक्टीरिया के खिलाफ। अच्छा, ये हमारे साथ हमको वही डायग्राम सुना है हम किस तरह यूज़ करते हैं। अच्छा, इनहिबिशन ऑफ सेल साइंथिसिस, पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, बैक्टीरिया एंड वेनकोमाइसिन यूज़ करते हैं। प्रोटीन की साइंथिसिस को इनहिबिट करने के लिए क्लोरमफेनिकॉल, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज़ करते हैं जो प्रोटीन को करता है। एंजाइमेटिक एक्टिविटी या फोलेट को करने के लिए हम क्या करते हैं, सल्फोनामाइड एंड ट्रायामेथोप्रेम करते हैं। और प्लाज्मा बैरेन के लिए क्या करते हैं, पोलीमाइसिन बी ये यूज़ करते हैं। और न्यूक्लिक एसिड के लिए क्यूनोलॉन एंड रिफेंटिन यूज़ करते हैं। Okay, cell synthesis inhibitor. Penicillin are antibiotic derived from several strains of common molds. All penicillin and cephalosporin have beta-lactam ring, therefore they are called beta-lactam antibiotic. This is the diagram. What is penicillin? Natural penicillin, penicillin G and penicillin V. Aminopenicillin, amoxicillin, ampicillin is called aminopenicillin. Anti-staphylococcal या penicillinase resistance penicillin, cloxacillin, decloxacillin, anti-pseudomonal, carboxypenicillin and uridopenicillin, tetracycline, clavulanate या piperacillin, tazobactam। ये नाम याद रखने हैं। जस्ट अभी आपने सुन लिया, इसको पेपर पर लिख दो तो याद हो जाएगा। Mechanism of action, penicillin and cephalosporin. The synthesis of cell wall of bacteria depend upon the enzymes named as a transpeptidase. Penicillin binding protein क्या है, ट्रांसपेप्टाइडेज ये प्रोटीन है जो इसको इनहिबिट करता है। द एंजाइम्स क्रॉस लिंक्स पेप्टाइडोग्लाइकलाइन चेन टू फॉर्म अ रिजिड सेल वॉल। पेनिसिलिन एंड सेफेलोस्पोरिन इनहिबिट ट्रांसपेप्टाइडेज एंड ब्लॉक द पेप्टाइडोग्लाइकलाइन एंड ऑफ द बैक्टीरिया सेल वॉल। Important to know, they are inactive against organism lacking of the cell wall peptidoglycan. चिकमो के कौन से बैक्टीरिया में सेलवाल नहीं है तो उसके खिलाफ ये इनएक्टिव है, काम नहीं करेगा। जैसा कि माइकोबैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई एंड वायरसेस के खिलाफ ये यूज़ नहीं होता। प्रोडक्शन ऑफ ऑटोलाइसिन, मैनी बैक्टीरिया पार्टिकुलरली ग्राम पॉजिटिव कोकाई प्रोड्यूस डिग्रेडेटिव एंजाइम्स ऑटोलाइसिन यूज़ करता है। दस द एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट ऑफ पेनिसिलिन इज द रिजल्ट ऑफ बोथ इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द एक्जिस्टिंग सेल वॉल बाय ऑटोलाइसिन। In general, gram-positive microorganisms have the cell wall that are easily reached by penicillin and therefore they are easily targeted. Gram-negative bacteria have a water-filled channel called pore to drug entry. Penicillin resistance. Penicillin are inactivated by beta-lactamase penicillinase that are produced by the resistance bacteria. अगर किसी पेशेंट में पेनिसिलिन रेजिस्टेंस है तो उसकी वजह क्या है, पेनिसिलिनेज एंजाइम की वजह से जो उसकी बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है। एंटी स्टेफाइलोकोकल पेनिसिलिन, मेथासिलिन, नेफासिलिन, एक्सासिलिन, डेक्लॉक्सासिलिन और बीटा लैक्टिमेज पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस पेनिसिलिन दी। Their use is restricted to the treatment of infection caused by penicillinase producing staphylococcus. जो उसमें उसको हम इनहिबिट करते हैं जिसमें पेनिसिलिनेज प्रोड्यूसिंग स्टेफाइलोकोकस। क्लेवलोनिक एसिड या सल्बैक्टम एंड टेजोबैक्टम आर बीटा लैक्टिमेज इनहिबिटर।
Anti-pseudomonal penicillin, piperacillin and tetracycline are called anti-pseudomonal penicillin because of their activity against Pseudomonas aeruginosa. Therapeutic uses: bacteria infections only, peptidoglycan cell-walled bacteria, staphylococcal infection, pharyngitis, sinusitis, otitis media and cellulitis, cephalus and diphtheria. ये इन डिसऑर्डर और डिजीज़ में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है पेंसिलिन का? स्किन रैशेज है, urticaria, hypersensitivity. Approximately 5% of the patient have some kind of reaction ranging from rashes to angioedema, marked swelling of lips, tongue, and anaphylaxis. Cross allergic reaction occur among the beta lactam antibiotic. Diarrhea is the common problem that is caused by the disruptions of the normal balance intestinal microorganism. अच्छा, cephalosporin. Cephalosporin drug are beta-lactam antibiotic that inhibit the cell wall of bacteria. Cephalosporin was the first isolated from the fungus named as the Cephalosporium acrimonium by Dr. Abraham in 1948. These are bactericidal antibiotic as they kill the microorganism when used at therapeutic dose. Mode of action is a penicillin. First generation इसका क्या है? The optimum activity of all first generation cephalosporin drug is against gram positive bacteria such as staphylococcal and streptococci, e.g. cefazolin, cefaroxil, cefradin and ceflaxine. Second generation drugs have more activity against gram-negative bacteria. Haemophilus influenza, Enterobacterium aeruginosus. In comparison to the first generation, their gram-positive spectrum is less than the first generation, and cefaminidol, cefoxitin, cefaclor, cefodoxime. अच्छा, फर्स्ट जनरेशन हमारे साथ क्या है? ग्राम पॉजिटिव, सेकंड हमारे साथ नेगेटिव, और थर्ड पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। मेरा ये बात याद रखना, आपको एमसीक्यूज में आएगा। थर्ड जनरेशन cephalosporin drugs are broad spectrum effective against both gram positive and gram negative bacteria. इसका ड्रग्स आते हैं सिफोटोक्सिम, सिफ्ट्राक्सोन, सिफ्टाजिडाइम एंड सिफेक्सिम. Fourth generation, these are extended spectrum antibiotic. They are resistant to beta lactamase. इसमें सिफिपाइम आता है. Fifth generation, ciftrolin and ciftobiprole are broad spectrum advanced generation cephalosporin that is administered IV. They are the only commercial available beta lactam in the United States with activity against MRSA and is indicated for the treatment of complicated skin and skin structures infection, community acquired pneumonia. The unique structure allow ciftrolin to obtain PBP2A found with MRSA and PBP2X found with a Streptococcus pneumonia. Important about cephalosporin. Cephalosporin are beta-lactam antibiotic that are closely related with both structurally and functionally to the penicillin. The first generation cephalosporin effective against staphylococcal infection. The third generation cephalosporin have enhanced activity against gram-negative bacilli. Cefepime is classified as a fourth generation cephalosporin and must be administered parenterally. Ciftrolin is a fifth generation and is effective against MRSA. Adverse effect: hypersensitivity, rarely anaphylaxis. The patients may be informed that diarrhea is a common problem caused by antibiotic, which usually ends with the antibiotic is discontinued. Cross allergy with cephalosporin should be considered. Nephrotoxicity may occur rarely. Carbapenem are a class of the highly effective antibiotic agent commonly used for the treatment of severe and high-risk bacterial infection. This class of antibiotic is usually reversed for non-suspect multi-drugs resistance bacterial infection. Mechanism of action: cephalosporin. However, these agents individually exhibit broader spectrum of activity compared to most cephalosporin and penicillin. Furthermore, carbapenems are typically unaffected by emerging antibiotic resistance even to other beta-lactam.
Uses of carbapenem: intra-abdominal infection, complicated urinary tract infection, pneumonia, bloodstream infection. Side effect: nausea, vomiting, and rashes are common side effects, and rarely seizures have also been reported. Monobactam are monocyclic and bacterial, produce beta-lactam antibiotic. Beta-lactam ring is not fused to another ring. In contrast, is most other beta-lactam. Monobactam are effective only against aerobic gram-negative bacteria, Neisseria pseudomonas. Azithromycin is a commercially available monobactam antibiotic used for bone infections, endometriosis, intra-abdominal infection, pneumonia, urinary tract infection, and sepsis. Adverse effect: monobactam can include skin rashes, occasionally abnormal liver function. Glycopeptide antibiotic या vancomycin. Vancomycin is a class of medication called a glycopeptide antibiotic. Mechanism of action: inhibits cell wall synthesis gram-positive barrier bacteria by binding to the DLAD L terminal of the growing peptide chain during cell wall synthesis, resulting inhibition of transpeptidase, which prevent further elongation and cross-linkage of the peptidoglycan. It is recommended intravenously as a treatment for complicated skin infections, bloodstream infections, endocarditis, bone and joint infections, and meningitis caused by the methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Common side effects include pain in the area of infection and allergic reaction. Occasionally, hearing loss, low blood pressures, or bone marrow suppressions occur. Ototoxicity, nephrotoxicity, Redman syndrome. This is very important. ये MCQs में आएगा. Phosphomycin. It is a novel class of antibiotic drugs with a chemical structure unrelated to other non-antibiotic. It disturbs cell wall synthesis by inhibiting phosphoenol pyruvate synthesis and thus interferes with the production of peptidoglycan. It is a bactericidal against range of gram-positive, gram-negative bacteria, including Staph aureus. It demonstrates a synergism effect when combined with penicillin, cephalosporin, aminoglycosides, or fluoroquinolones. UTI: single 3 gram dose PK orally and parenterally, excreted unchecked urine 90 to 95%. Protein synthesis inhibitor antibiotic that inhibit protein synthesis. Tetracycline, aminoglycoside, and macrolides. Tetracycline में tetracycline, oxytetracycline, demaclocycline, minocycline, and doxycycline. Aminoglycoside: streptomycin, neomycin, gentamicin, amikacin, and tobramycin. Macrolide में erythromycin, clarithromycin, azithromycin, roxithromycin, and spiromycin. Aminoglycoside. Mechanism of action: aminoglycoside irreversibly bind to the 30S ribosomal subunit of bacteria, thus binding inhibit protein synthesis. Aminoglycoside are most used against gram-negative enteric bacteria, gram-negative rods that inhabit the gastrointestinal tract, V. chlora, and Escherichia coli. They can be used in combination with beta-lactam antibiotic to extend coverage and synergism. Spectrum of activity: broad spectrum, as effective against aerobic gram-negative and gram-positive bacteria, but not effective against aerobic bacteria because oxygen-dependent active transport. This requires strip makes aminoglycoside ineffective against anaerobic bacteria. Clinical uses क्या है? Mycobacterial infection, brucellosis. Brucellosis is a zoonotic infection caused by the bacterial genus Brucella. The bacteria are transmitted from animal to humans by ingestions through the infected food products, direct contact with an infected animal. Plague is a disease that affects human and other mammals. It is caused by the bacterium Yersinia pestis, and tularemia is a series infections disease caused by intracellular bacterium and Francilia tularensis. Important to remember about aminoglycoside: are poorly absorbed from the gastrointestinal tract and have to be parenterally. As aminoglycoside are strong dipolar molecule, they are eliminated by kidney. Therefore, the kidney patients does need to be adjusted. Aminoglycosides are bactericidal. Aminoglycosides do not cross the blood-brain barrier but can cross placental barrier. Nephrotoxic: check renal function, BUN, and creatinine. Macrolides. Macrolides are protein synthesis inhibitor. Mechanism of action: macrolide antibiotic do so by binding reversibly to the P side on the 50
as subunit of bacterial ribosome. The action is considered to be bacteriostatic. Macrolides are actively concentrated within the leukocytes and thus are transported into the site of infection. Common drugs erythromycin and clithromycin and azithromycin. Antibacterial spectrum. Erythromycin, this drug is effective against many of the some organisms as penicillin G. Therefore, it may be used in a patient with penicillin allergy. Clithromycin has the activity similar to the erythromycin, but it is also effective against Haemophilus influenza. Its activity against intracellular pathogens such as chlamydia, Helicobacter pylori is higher than that of erythromycin. Azithromycin more active against respiratory infections due to H. influenza and Moraxella catarrhalis. Adverse effect: gastric distress and motility, ototoxicity, and cholestatic jaundice. Tetracycline. Mechanism of action: they are protein synthesis inhibitor. Tetracycline binds reversibly to 30S subunit and block the binding of amino acid containing tRNA on the messenger RNA ribosome complex. Tetracycline prevent binding of trans RNA. Antibacterial spectrum. Tetracycline are active against many gram-positive and gram-negative bacteria, including contain anaerobes, Rickettsia, chlamydia, and mycoplasmas. Important to learn: tetracycline bind to the calcium is newly formed teeth in young children, thus can result in a brown to yellow discoloration. MCQs के लिए है. Tetracycline can bind to calcium in growing bone, resulting in deformity. Tetracycline doxycycline can cause phototoxic skin rashes due to their ability to absorb UV radiation present in sunlight. They are bacteriostatic. Calcium in the milk bind to the tetracycline and prevent gut absorption. Other metals which affect absorption of the tetracycline are aluminium, magnesium, iron. Tetracycline cross the placenta, interfetal circulation, accumulate in the fetal bones, and if used during the second या third trimester may cause a premature discoloration. तो tetracycline में बहुत मसले हैं, सारे याद रखो. Mechanism of action. किस तरह एक्शन करता है? This is the mechanism of action. Chloramphenicol. The use of chloramphenicol, broad spectrum antibiotic which is obtained from Staphylococcus venezuela, is the restricted to life-threatening infections for which no alternatives exist. Mechanism of action: chloramphenicol binds reversible to the bacteria 50S ribosomal subunit and inhibits protein synthesis at the peptidyl transferase reaction. This is the mechanism of action of chloramphenicol. This is the antimicrobial spectrum, broad spectrum antibiotic active against the both aerobic and anaerobic gram-positive, gram-negative bacteria, Rickettsia and Mycoplasma. Primarily bacteriostatic, high concentration bactericidal effect on the some bacteria, H. influenza and meningitis and bactericides. Adverse effect: bone marrow suppressions, aplastic anemia, thrombocytopenia, irritating effects, nausea, vomiting, diarrhea, gray baby syndrome, cyanosis, vomiting, green tools, and vasomotor collapse, hypersensitivity reactions, rashes, fever, and angioedema. Oxazolidanus. Linezolid. Linezolid is a synthetic oxazolidanus developed to combat resistance gram-positive organisms such as the methicillin-resistant Staphylococcus aureus and the penicillin-resistant streptococci. Antibacterial spectrum. Antibacterial action is linezolid is directed primarily against gram-positive organisms such as Staphylococci and Streptococci and Enterococci. Other agents that interfere with bacterial protein synthesis, linezolid bacteriostatic. However, it is bactericidal against Streptococci. Mechanism of action: it binds bacterial protein synthesis by binding 50S ribosomal subunit near the interface of 30S, thus the information of initiation complex is prevented. Adverse effect: myelosuppressions including anemia, leukopenia, and pancytopenia, reversible thrombocytopenia, reversible neutropenia, reversible optic neuropathy. DNA synthesis inhibitor, fluoroquinolone. General properties: synthetic, antimicrobial, bactericidal. Broad spectrum quinolone can enter cells easily and therefore often used to treat intracellular pathogens such as Legionella, pneumophila, and Mycoplasma pneumonia. Common quinolone: ciprofloxacin, gemifloxacin, levofloxacin, moxifloxacin, norfloxacin, ofloxacin.
This is the mechanism of action. Mechanism of action of fluoroquinolone. Mechanism of action: fluoroquinolone block bacterial DNA synthesis by inhibiting bacterial topoisomerase 2 DNA gyrase and topoisomerase 4. Inhibition of DNA gyrase prevent the relaxations of the positively supercoiled DNA that is required for normal transcriptions and replication. Inhibition of topoisomerase 4 interferes with separations of the replicated chromosomal DNA into the respective daughter cells during cell division. Clinical uses: urinary tract infection, upper and lower respiratory tract infection, bacterial diarrhea, tuberculosis, soft tissue bones and joints, and intra-abdominal and respiratory tract infection, including those caused multi-drugs resistance organisms such as Pseudomonas diabetic foot. Ciprofloxacin is a drug of choice for prophylaxis and treatment of anthrax, gonorrhea, norfloxacin या ofloxacin, bacterioprostititis. Adverse effect यह है most frequent side effect: gastrointestinal reactions, nausea, dyspepsia, vomiting, CNS reactions such as dizziness and insomnia, and headache. Folate या antagonist clotrimazole and trimethoprim and sulfamethoxazole. These drugs stop bacterial cells from using folic acid to make DNA. Sulfamethoxazole, dihydrofolic acid. Dihydrofolic acid is a folic acid derivative which is converted to tetrahydrofolic acid. Tetrahydrofolic acid is needed to make both purines and pyrimidines, which are binding blocks of DNA and RNA. Dihydrofolate synthesis: it is the enzymes which convert the dihydrofolic acid to tetrahydrofolate. Folate. In many microorganisms, dihydrofolate acid is synthesized from p-aminobenzoic acid. PABA. Sulfonamides are the synthetic analog of PABA. The sulfonamide compete with PABA for the bacterial enzymes dihydrofolate synthesis. Trimethoprim prevent the conversion of dihydrofolate to tetrahydrofolate. The enzymatic reaction is inhibited by trimethoprim. Ultimately, there is decreased availability of the tetrahydrofolate cofactor required for purine and pyrimidine and amino acid synthesis. This is the mechanism of action. Adverse effect: they are ignited via kidney, require dose adjustment for renal dysfunction. Crystalluria is a major side effect of sulfonamide. Avoid vitamin C use if acidifies urine. Megaloblastic anemia, leukopenia, and thrombocytopenia may occur with the use of clotrimazole due to the danger of carnicotorous. Sulfa drugs should be avoided in newborns and infants less than 2 months of age. This is the reference, is the end of antibacterial drugs. Thanks